जी तो स्टूडेंट्स, रामेश ये फिर लिखते रहिएगा। हम आज जोसेफ एंड्रूज की अपनी पिछली गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जोसेफ एंड्रूज बाय हेनरी फील्डिंग। Last day we were looking at how wildly, how beastfully, no talking, how wildly and how beastfully Mrs. Slipslop comes on the way to Joseph Andrews. देखिए, मैंने आपसे ना पूछना है कि मैंने क्या बताया। रैंडम पूछ सकता हूं किसी से भी, अटेंटिव होके बैठे। Mrs. Slipslop, I told you her features. What kind of features Mrs. Slipslop has? What kind of features Mrs. Slipslop has? Yeah? She has a beard on her face, pimples, long nose, short eyes, small eyes, can it? Just like a cow. Okay. Now Joseph Andrews has posted the letter. And Mrs. Slipslop is really flared up with Joseph Andrews. So he has brought the wrath of two women. He has got the anger of two women. The anger of Lady Booby and the anger of Mrs. Slipslop. He has posted the letter, and when he comes back, after posting the letter, there comes the attendant of Lady Booby to Joseph Andrews and says, Joe, Madam is calling you. Madam is calling you. Now Joseph Andrews goes again. She is again in the same posture, lying half naked. She is attracting him, seducing him to evil. She is seducing him to evil. Again she says, Joe, what's your concept of love? He says, ma'am, I don't know what love is. She says, you are trying to befool me. कौन बातें कर रही हैं आप में? Isn't it you who has made Betty pregnant? Betty कौन है? Betty इसकी एक और मुलाजमा है। किसकी? Lady Booby की। She is a young girl, very young again, and she is the chambermaid of Joseph Andrews. Now, what the blame on Joseph Andrews? क्या इल्जाम लगाया? तुमने बेटी को नहीं प्रेग्नेंट किया और मेरे साथ बकवास करते हो कि तुम्हें लव का पता ही नहीं। Joseph says, oh madam, no. I even don't know how many women and how many men are working in your house. मुझे तो यह भी नहीं पता कि कितने मर्द और कितनी खवातीन आपके। अवैस, आर यू गेटिंग? ठीक है, मुझे तो यह भी नहीं पता कितने मर्द और कितनी खवातीन हैं आपके घर में काम करते। I didn't do so. And when Lady Booby is sure that he is not going to surrender his virtue, जब Lady Booby को ये यकीन हो गया कि अब ये मेरे जो मैं दावत बुराई दे रही हूं उसे उस पे नहीं कर रहा, Lady Booby says, okay, you can leave. And she calls her steward. Who is a steward? What does steward mean? Steward होता है मुंशी।
कौन होता है जी? हु कीप्स द अकाउंट ऑफ द अदर्स, जो पैसों का हिसाब किताब करता है. सो शी कॉल्स हर स्टीवर्ड एंड सेज, आई हैव डिसमिस्ड जो फ्रॉम द जॉब, सेटल हिज अकाउंट्स. मैंने इसे जॉब से निकाल दिया है, तुम इसका हिसाब किताब कर दो. आई हैव डिसमिस्ड हिम फ्रॉम द जॉब, सेटल हिज अकाउंट्स. Steward calls Joseph Andrews and says, Joseph, Madam has dismissed you from the job, and I am here to settle your accounts. You are indebted of lady, of madam. You have to pay. और तुमने मैडम के जो पैसे देने हैं उसके हिवज अब ये कर रहे हैं कि चूंकि पैसे नहीं है तुम्हारे पास, सो वी आर गोइंग टू रिमूव योर क्लोथ्स फ्रॉम योर बॉडी. उसके कपड़े उतारते हैं, एंड दे गिव हिम जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ टू कवर हिज बॉडी. जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ टू कवर हिज बॉडी. इट इज चिल कोल्ड नाउ. इट इज रियली अ चिली नाइट. रात के वक्त निकाला इसे घर से. इट्स अ मूनलिट नाइट. चांदनी रात है. अब जोसेफ की एक बिलवेड है, उसका नाम है फैनी. बचपन से मोहब्बत है इसे उससे. दे लव ईच अदर सिंस चाइल्डहुड. अब जोसेफ, आफ्टर बीइंग डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, he is double minded where to go now. He has two options, whether to go in search of his parents. ये छोटा सा ही था तो वालदैन से गुम हो गया था ना, इसे नहीं पता कि इसके वालदैन कहां हैं. अब दो ऑप्शन है कि ये वालदैन को तलाश करने जाए या अपनी बिलवेड फैनी के पास जाए. तो कहां जाएगा? एक तरफ उसका घर, एक तरफ महकदा. मैं किधर जाऊं होता नहीं ये फैसला, ऐ गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा. किधर जाए? टू गो टू फैनी हिज बिलवेड, और टू गो टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स. कहां जाएगा? कहां जाएगा? पेरेंट्स के पास. ओके, वही हुआ. चलो अम्मी अबू नू फिर लभ लांगे. जरा पहले फैनी को चल रहे हैं. अच्छा, अब आगे का इसका सफर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नॉवल के थीम्स बता दूं. ये बहुत ख्याल ज़हन में रखिएगा. इनिशियली द नॉवल हैज टू सेंट्रल आइडियाज. The first is the assault on chastity and the preserve of chastity. This is the theme of the novel. Assault on chastity and the preserve of chastity. आबरू पर हमला और उसकी हिफाजत. Who has assaulted the chastity of home? Who assaults the chastity? Sorry? Lady assaults the chastity. And who preserves the chastity? देखिए, ये हमारे यहां एक कॉन्सेप्ट चलता है, आपने ये ज़हन में रखना है. हमारे यहां ये होता है कि मेल को समझा जाता है कि ही असॉल्ट्स द चैस्टिटी. कभी नहीं ये पढ़ा हमने अखबार में कि अ फीमेल असॉल्ट्स द चैस्टिटी. देखिए, जो असॉल्ट करता है ना, उसकी अपनी चैस्टिटी भी असॉल्ट होती है ना. यानी जो किसी की चैस्टिटी को असॉल्ट कर रहा होता है, पहले वो अपनी चैस्टिटी को असॉल्ट करवाता है. चैस्टिटी, the importance of chastity is equal
आइदर इट इज ऑफ मैन और वुमेन। हमारे यहां ये एक गलत कॉन्सेप्ट है ना कि मर्द की चैस्टिटी समझा जाता है कि कोई नहीं, खातून की चैस्टिटी को, तो ये इक्वल होती है। मेल की चैस्टिटी और फीमेल की चैस्टिटी इक्वल अहमियत रखती है। यू गॉट द पॉइंट? सो असॉर्ट ऑन चैस्टिटी एंड द प्रिजर्व ऑफ चैस्टिटी, isn't it the story of Joseph the prophet? यही हुआ था ना, वहां भी एक खातून ने चैस्टिटी असॉर्ट करने की कोशिश की थी ना, और एक मेल ने उस चैस्टिटी को प्रिजर्व किया था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो देयर इज अ क्लोज रिजेम्बलेंस बिटवीन दीज टू, क्लोज रिजेम्बलेंस। ओके, नाउ Joseph is going to live in the chill cold night, just a piece of cloth on his body. It's really not an easy journey he is going to travel on. It's really a very difficult journey, because in those days the journey was not so easy as it is today. Today you can take Gujar Tayyara and go by it shaan karke, and if you are a bit wealthier, you can take Niazi bus or what else? हाँ जी, संधू बाबर, संधू खाबर, or you can hire your own car, or you can take your own car, or you can buy the ticket of aeroplane, है ना? बस पे बैठे, कार पे पैसे हैं तो जहाज पे बैठे, तो जहाज बन के पहुंच जाए। अब क्या है, यहां ये नहीं है, यहां तो आपको एक छकड़ा भी मुयस्सर नहीं है। यू विल हैव टू ट्रेवल ऑन फुट, पैदल जाना है, पैदल जाना है, और फिर रास्ता भी आसान नहीं है। रास्ते में 100 डाकू, चोर, लुटेरे, हर जगह 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 पे, हर मोड़ पे चोर, डाकू, लुटेरे। ये कोई आसान नहीं है सफर। उसे रात, चांदनी रात में, he has been deprived of his clothes even. It's a chill cold night, सख्त सर्द रात। He will go, और ये किस चीज की सजा है? ये अपनी आबरू को बचाने की सजा है? देखिए, अच्छे काम में मुसीबतें और मुश्किलें जरूर आती हैं, और जो इसको फेस कर जाते हैं वही सुरखरू करार पाते हैं, है ना? इंसान की अजमत इस बात में देखी जाती है कि इसने जिंदगी में मुश्किलात कितनी बर्दाश्त की होगी। आप तारीख उठा के देख लीजिए, जो जो शख्सियात बुलंद मर्तबे पे फाइज हुई हैं, उन्होंने जिंदगी में मुश्किलात बहुत उठाई। हैरान हूं कि दर्द से कैसे बचा रहा, वो शख्स तो गरीबो गुयूर इंतहा का था। एनीवेज, he has started traveling with an idea that now he will go direct to his beloved's house. He will see his beloved, oh, and he will enjoy the charm of the beauty of his beloved. कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर बदर, कभी उनके दर, गमे जिंदगी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। किसी की मोहब्बत में कहां कहां जाएगा। एनीवेज, अब सफर का अगला हाल हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।